Okay, dear friends, good evening. How are you? Today I have sent you the study material. Can you inform me? Have you downloaded it, or still it is lingering in the, simply in PDF form? Please inform me. Have you downloaded the study material today? I have sent you. Okay, that's good. So let us do the some remaining part of the topic first, because in the previous class I have discussed about how to prepare the cultural part, and you people have given you the given your consent. Yes, you people have been clear about the method of my teaching. How am I going to teach you the culture part with the same integrated approach? My students, I have told you earlier that if according to me, in fact the social science as a whole should be integrated. Only then you can develop your confidence into the topic and you can make a proper logic on the topic, and that will give a sense of reasoning on question, how to start the question, how to end the question. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा सोशल साइंस ही बेस्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए, और आपको एक इंटीग्रेशन बनाना चाहिए. तो मैंने तो कल्चर में उसी के आधार पर पढ़ाना है. तो पहले मैं कुछ आई हैव टू डील विद सम बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट. That is the prelims question. That will be the type of the question what you find in prelims exam. And apart from this prelims exam, then you will find a lot of questions in the mains part. But exactly this is not the type of question you people have in the examination. What is the type of the question I have discussed with you in the previous class, and I will deal with this question again. But here I have to inform you कि जैसे meaning of culture and heritage. You find the term here the culture and heritage. मतलब संस्कृति एवं विरासत. मतलब संस्कृति एवं विरासत में क्या संबंध है? That is a fundamental thing. My friends, normally heritage is taken as a synonym for culture, but this is not justified, and this is a wrong notion. We cannot take heritage as a substitute or as a synonym for culture. My student, you can say that culture is having some political tinge. The term culture is having some political tinge. If there is some negative tinge in any specific term, in any specific phenomena, so that should not be the part of the culture. Here I am giving the concrete example. Suppose if someone has inherited, when someone is having the two things in their inheritance, in his inheritance. The first legacy of his forefathers is property, and second legacy of his forefathers is the diabetes, the disease like diabetes, that is you can say genetic. So if someone is given the choice whether you have to take as a legacy simply property or even diabetes, so he will reply no, you will just try to take the legacy of property, but you will not accept diabetes. It is better that diabetes should be taken by someone else. The legacy of diabetes should be taken by someone else. The same happens in case of heritage and culture. If heritage, though that part of heritage which is having the positive tinge, that is culture. But that part of heritage that is having the negative connotation, for example, sati system, for example, widow, you can say the pathetic condition of widow, for example, child marriage, for example, Padda system. So they have been the part of the Indian heritage, but they are not the part of Indian culture. मतलब कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई अगर संस्कृति और विरासत के बीच का संबंध पूछे तो हम यह कह सकते हैं कि जो अच्छी विरासत है वो संस्कृति है, जो बुरी विरासत है वो संस्कृति नहीं.
किसी के फॉरफादर से उसको प्रॉपर्टी मिल रही है विरासत में और डायबिटीज की बीमारी मिल रही है, तो यही चाहेगा कि प्रॉपर्टी की लेगेसी हमें मिल जाए और डायबिटीज किसी और को मिल जाए। द सेम हैपेंस इन केस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। तो पहली बात तो ये है। द सेकेंड वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? My friend, these two terms, culture and civilization, these two terms are quite misleading because the relationship between culture and civilization is having different connotation in different turn of, you can say in different situation. For example, here I can say, अब suppose during ancient period, so ancient period the term, what is temperature? Give just increase 1 point more. Ancient. In case of ancient, you can say, you will find here the culture and civilization. So both are having the two different connotation. Culture means during ancient period, whenever you will make a study of different cultures, ancient culture, so that is called a pattern of life in a specific region. इन स्पेसिफिक रीजन मतलब किसी खास क्षेत्र में जो लोगों के जीवन जीने की पद्धति होती है उसको एंशिएंट टाइम में कल्चर बोलते थे। फॉर एग्जांपल यू कैन से कालीबंगा कल्चर, पोथी कल्चर, ईरानी बलूची विलेज कल्चर। मीन्स कि द पीपल आर लिविंग द स्पेसिफिक रीजन एंड in the specific region, what is the pattern of life, that is called culture. But this pattern of life actually spread to a vast region. This pattern of life is so important, so imitated by others. Others are going to adopt it, and that pattern of life is spread to a vast region. And it became a standard then it takes the form of a civilization. मतलब इसका ये कहना है कि अगर वह जो जीवन पद्धति आपने खास क्षेत्र में देखी, अगर वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और फिर वह एक जीवन पद्धति पैटर्न ऑफ लाइफ तो कल्चर हुआ, फिर वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और वो एक मानदंड के रूप में स्थापित हो जाता है, स्टैंडर्ड के रूप में स्टेब्लिश कर जाता है, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सिविलाइजेशन। मीन्स कि becomes a standard in a vast region, so that is civilization. So here you can find a difference between civilization and culture. जैसे कल्चर है वो एक खास रीजन है, उसमें पैटर्न ऑफ लाइफ है, और अगर उस रीजन से स्प्रेड करके किसी वास्ट रीजन में फैल जाता है और वहां पर वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बन जाता है, तो वो कहलाता है सिविलाइजेशन। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये है, it is during ancient period, but whenever you are going to, you can say, equate this culture and civilization in modern context. Here in modern context, that is difference. In modern context, you can say both are having the different connotation. In modern context, culture is what? Culture and civilization. In ancient context, one more thing which I have to inform you. During ancient periods, civilization is having some another meaning as well. For example, some scholars believe that if any society just comes to the stage of urbanization and the use of a script, then it should be given the standard of civilization. Means कि अब देखो, if some society, a community of people in a specific region, so this community of people in a specific region is going to upgrade itself, and it adopts some space, you can say,
script. It started to use a script and it reaches up to the standard of urbanization. Then it should be characterized as a civilization. मतलब एक विचार यह है कि अगर कोई समुदाय है, अगर वह एक लिपि स्क्रिप्ट को एडॉप्ट कर लेता है और अर्बनाइजेशन के स्टेज में पहुंच जाता है, तब उसको सिविलाइजेशन कहना चाहिए. एक एंशिएंट पीरियड. मॉडर्न में दोनों का अलग अलग है. मॉडर्न में क्या है कि सिविलाइजेशन सिंबलाइज आउटवर्ड फॉर्म. आउटवर्ड फॉर्म मीन्स की आउटवर्ड फॉर्म एंड एक्सटर्नल फॉर्म, एंड कल्चर इज द इंट्रिंसिक क्वालिटी. civilization is outward form and culture is intrinsic quality. For example, you can take a flower, the beauty of flower, the color of flower, the petals, etc., which are visible, that is civilization. But smell, enchanting smell from this flower, so that denotes culture. मतलब कि कोई फूल है तो फूल की जो पंखुड़ियां हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसका जो रंग है वो सभ्यता है, और जो उसके अंदर से खुशबू निकल रही है वो कल्चर है. तो कल्चर इज हैविंग सम एलिमेंट ऑफ परमानेंसी. बट देयर इज वन स्कॉलर, यू कैन से स्पेंगलर, ही इज अ जर्मन स्कॉलर. वंस ही मेड ए स्टेटमेंट, व्हेनेवर सिविलाइजेशन प्रोग्रेसेस कल्चर डिक्लाइंस. ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी उसका स्टेटमेंट है कि व्हेनेवर सिविलाइजेशन यू कैन से एक्सेसिवली प्रोग्रेसेस देन कल्चर डिक्लाइंस. मतलब उसका ये मानना है कि भाई सिविलाइजेशन तो आउटवर्ड फॉर्म है, तो अगर आपका ध्यान आउटवर्ड फॉर्म पर ज्यादा चला जाता है तो अंदर की क्वालिटी से आपका ध्यान हट जाता है, तो कल्चर डिक्लाइन कर जाता है, जबकि सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर जाता है. तो सिविलाइजेशन का ज्यादा प्रोग्रेस करना कल्चर के लिए अच्छा नहीं. ये मानना है किसका? स्पेंगलर का. He was a German scholar. तो यही दोनों में डिफरेंस है. अब you people have to give me some clue. Are you clear or should I do something else? Difference between civilization and culture. Ankur, ask my students. Please give some hint. Okay, my students, are you clear about culture and civilization? Yes. Then what is the relation between? अच्छा, ये तो हो गया. At present, there is relatively less discussion about civilization, while culture is being discussed excessively. What is the reason behind this? Actually, there is one statement. If you are going to observe in present context, we come to realize in present context, civilization is now an ignored term. The term civilization is normally being ignored in intellectual arena, while the culture term is too much discussed. What is the reason behind that? The reason being, my friends, actually civilization symbolizes some eliteness. It gives a hint towards the upper strata of society. So it is having some element of eliteness. For example, you are talking about the classical art, that is symbolizing civilization. So that belongs to the upper strata of society, that belongs to the elitist elements of society. But at the same time, you will come to realize that culture means, particularly you will come to know this anthropologist have frequently used the term culture these days. Frequently, the culture term is in frequent use. Normally, culture is believed to be the study of the mental status and the way of life, the customs and tradition of those who are living on the margin of society. मतलब मैं आपको हिंदी में बता दूं, जैसे आप इसको ऐसे मान के चलिए कि जो सिविलाइजेशन है उसमें एक अभिजात्यपन है, मतलब समाज के ऊंचे वर्ग से जुड़ा हुआ है, एक एलिटनेस है.
और कल्चर शब्द का प्रयोग आजकल मानव शास्त्री बहुत ज्यादा करने लगे। जैसे टुडे यू फाइंड द टर्म हियर कल्चर, तो कल्चरल स्टडीज। अब टुडे this is a very fashionable term, what you call cultural studies, so that is very fashionable term. So here the question arises कि what does it mean? It meant, culture meant what? That is the study of the mental status, the behavior, the pattern of life of those who are on the margin of society। मतलब वैसे लोगों की मानसिकता, उसके व्यवहार के अध्ययन पर संस्कृति बल देता है, मानव शास्त्री लोग खासकर, जो समाज के हाशिए पर है। तो चूंकि आज डेमोक्रेटाइजेशन, एज दिस एरा इज मार्क्ड बाय ग्रोइंग डेमोक्रेटाइजेशन, यू नो, so as there is the growing democratization, so now those people who are on the margin emerges to be much important than those who are in the center. So in the today's connotation, the margin became more important than center. So that's why today, you know, in place of civilization, culture is the term, culture is frequently used. शायद मैंने आपको समझा दिया है, अगर नहीं समझा होगा तो पूछ लेना, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। प्लीज आस्क, जस्ट नाउ ही हैज, आपने एक एग्जांपल दिया था, जस्ट नाउ ही हैज गिवन एग्जांपल ऑफ फ्लावर, कैन आई राइट शेप इफ इट रिलेटेड? कैन आई राइट इन ए शेप? Yes, why not? Giri, yes, you can give the example. AC is the region where you can make a very independent intellectual flight. UPSC is simply giving you the opportunity to write, you know, with any restriction, and that paper is simply essay. Otherwise, in other paper, it appears that your hands are tied. You cannot, you can say, write independently, because your answer is just, you can see, the answer is supposed to reflect, to have reflected within 150 and 200 words. So it is in a shape where you can reflect your, you can say, the flight of your ideas. किसमें? हाँ, मैं बता रहा था कि देखो, कल्चर, अब हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में। देखो, जैसे सिविलाइजेशन है, तो जो सिविलाइजेशन टर्म है ना, उसका यूज आजकल क्या हो रहा है कि समाज में जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड पीपल है, जिसको एलिट पीपल कहते हैं, तो उनके बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके। और जो कल्चर है, वो आजकल कल्चर शब्द का प्रयोग खासकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री करते हैं। फिर बता देना मुझे, तुम क्लियर होना चाहिए। मेरे क्लास में किसी को मैं नहीं चाहता कि कोई ये बोले कि भाई मैं बोले क्या, मतलब तुमको ऐसा, अगर तुमको ऐसा होगा तो फिर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जैसे समाज में, जो सोसाइटी में जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, तो उनका बारे में मानव शास्त्री उनके लाइफ के स्टडी पर बल देते हैं। उसको कल्चर का भी दो मीनिंग निकलता है। एक कल्चर तो हाई कल्चर हुआ, जो हाई कल्चर हुआ जिसमें आप देखते हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह है, उसको कल्चर का पार्ट मानते हो। दूसरा क्या है कि आजकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं, वो करते हैं जो समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो पुअर पीपल है, जो डिस्कार्डेड, मतलब डिस्कार्डेड तो नहीं कर सकते, हम कह सकते कि जो मार्जिन पर है, उनके लाइफ के स्टडी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं वो कि जो आजकल क्या हुआ है कि चूंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चर के नाम पर लोअर क्लास के लोगों के लाइफ के स्टडी पर बल दिया है, तो सिविलाइजेशन शब्द का यूज कम हो गया है। क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन का टाइम है ना, तो आजकल तो इंपॉर्टेंस उसका ज्यादा है जो मेजोरिटी है लेकिन गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो डाउनट्रोडन है। सो दैट्स व्हाई टुडे यू नो कि नाउ दिस कल्चर टर्म हैज बीन फ्रीक्वेंट इन यूज, बट सिविलाइजेशन टर्म इज नेग्लेक्टेड। क्योंकि सिविलाइजेशन समाज के अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी से है, तो लोग समझते हैं कि भाई ये तो बड़े लोग हैं, ये तो है ही, हम छोटे गरीब लोगों को तो देखें। तो बेसिक, दिस इज द बेसिक मेंटालिटी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, civilization denotes, or you can say reflects,
the higher state of society, and culture as the lower, or culture reflects the behavior, the mental status. According to anthropologists, a culture reflects the behavior, the mental status of those who are on the margin of society. So that's why now the life of this margin of society, the life of the poor people, so that was going to more important or affect now. So in this way you can say now culture is more important than civilization, because the culture belongs to the lower state of society according to anthropologists. अब तुम लोग हिंट करो, क्लियर हुए या नहीं? क्लियर है? Sorry. Although this sort of question you will not find in the question paper, this is not important exactly from the exam, but this is essential because you are making a dive into the topic like or culture. So before making a dive, you have to be aware of the certain basic and foundational ideas about civilization and culture. So that's why I have just preferred that such issues should be discussed first, then we have to move into and enter into the topic. What is the meant by classic? Achha. Oh. Just 1 minute. कुछ तुमने काट दिया है कुछ. यस. अच्छा. ओह. ठीक है. ओके. Now the next one. What is the relation between culture and religion? So my students, even that is a mind-boggling question to you. What relationship exists between culture and religion? So culture and religion, you know. What is polyphonic culture? I will discuss. I will polyphonic culture. I will discuss with you. Firstly, let me make this point clear. हाँ, बोलो. Roshan करेंगे सर कि then culture and civilization are not inclusive. Not inclusive term is not the proper term for that. Roshan. Yes. Roshan, here I have to give a hint you. While dealing with the topic like civilization and culture, it is itself a very confusing topic, because you will going to compare civilization and culture in ancient context. So that is having the one meaning. And if you are going to make a comparative study between the two in modern context, you will find a different connotation. So that is the point of difference between civilization and culture, you can say. Ibrahim Khalil, please dictate the definition of culture and. What? Ibrahim Khalil, please dictate the definition of culture and civilization. Culture is a pattern of life. The culture is a pattern of life of the people living in the particular region. And civilization is if this people and this standard of life is spread to a vast region and becomes the standard, so then it takes the form of a civilization. मतलब कल्चर एक छोटी इकाई है एंशिएंट कंटेक्स्ट में, और सिविलाइजेशन एक बड़ी इकाई है. मतलब लोग एक खास क्षेत्र में रहते हैं तो उनका जीवन, रहने की पद्धति, तौर तरीके कल्चर है, और जब एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और वो एक मानक बन जाते हैं, स्टैंडर्ड बन जाते हैं, जो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, तो सिविलाइजेशन हो जाता है. ये एंशिएंट कंटेक्स्ट में. मॉडर्न कंटेक्स्ट में सिविलाइजेशन आउटवर्ड फॉर्म है, तो कल्चर इंट्रिंसिक क्वालिटी है.
तो ये तो अंतर में बता चुका हूं, तो और मैटर मैंने दिया ही है, तो इसको अब नोट क्या करवाना है? रुचि पूछिए सर, कैन वी से दैट कल्चर क्रिएट रिलीजन? No, Ruchi, let me explain between culture and religion. Religion is a part of culture. Culture is was having a larger connotation. Culture is all inclusive. It consists of art, architecture, literature, you know, uh, attitude of mind, pattern of life, dress pattern, religion. Religion is simply a part of culture. Religion is not a substitute for culture. So, my students, whenever I have taught you modern history, I have made this point clear. When Jinnah, Muhammad Ali Jinnah made a statement that Hindus and Muslims are the two nations, simply on the basis of religion. So, this was denounced by other scholars on the ground that Hindus and Muslims were living together for nearly half a millennium years, means 500 years. They developed some sort of composite culture. So, this composite culture consists of different aspects. For example, art, literature, art and architecture, literature, a pattern of life, dress habits, food habits, and even religion. So, religion was simply a part of it, but denying the other aspects of culture and giving excessive emphasis over religion, Jinnah certainly committed a mistake in making a declaration that Hindus and Muslims are the two nations, and lastly had to pay for that because Eastern Pakistan, which is today known as Bangladesh, so that was separated from Western Pakistan on the basis of cultural division. In spite of the fact that both parts belong to the common religion, but as their culture was different, the eastern part was influenced by Bengali culture and western part by Punjabi culture. So it was the bifurcation between the two cultures. तो मतलब कुल मिला के ये तय होता है जो कल्चर है वह एक बृहत्तर इकाई है और रिलीजन उसका एक छोटा सा पार्ट है. फिर दूसरी बात मैं बताऊं कि रिलीजन के भी दो पार्ट होते हैं. रिलीजन एक पार्ट उसका होता है जिसको कहोगे आइडियाज या मेटाफिजिक्स भी उसको बोलते हैं. मेटाफिजिक्स का मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. मैंने कोई भी रिलीजन है, जैसे आप आइडल वर्शिप है, यू आर गोइंग टू टेम्पल, तो इवन द टेम्पल एंड आइडल वर्शिप इज हैविंग सम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, यू नो, इट वाज हैविंग सम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, यू मैंने इट इज हैविंग सम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. क्योंकि मंदिर है, मूर्ति पूजा है, तो उसके पीछे भी तो एक दर्शन है ना भाई, कौन है, क्या है, इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी तो है. तो वो है फिलोसॉफिकल पार्ट. और दूसरा है इसका रिचुअल्स का मतलब हुआ कि कैसे हमें, मतलब उसका आउटवर्ड फॉर्म, जैसे आइडल वर्शिप है, उसको पूजा अर्चना है. और हिंदुइज्म के पीछे जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, जैसे जिसको मोनिस्टिक फिलोसॉफी कहते हो, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा. तो फिलोसॉफिकल पार्ट कल्चर है, लेकिन जो आउटवर्ड फॉर्म है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कल्चर, दैट इज गोइंग टू सम टाइम मेकिंग अ कल्चरल कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया, यू कैन से. अब पता चला कि अब कहीं मूर्ति विसर्जन के लिए हो रहा है, आइडल, यू कैन से दैट इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेशन फॉर द इमर्सन ऑफ आइडल्स, so that is protested by someone as it was using the music कि नहीं, before this religious monument the music should not be played. And on the other hand you will find that if some different sorts of things were done by one sect, another sect was going to make a point of objection. तो ये जो आउटवर्ड रिचुअल्स है ना, वो उसको हम रिचुअल्स को, जो अनुष्ठान जिसको बोलते हो, उसको हम लोग कल्चर ना माने, लेकिन उसका जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, उसका जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको हम कल्चर मान लें. क्योंकि उसका जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है वो तो फिर समाज में कई बार डिवाइड पैदा करता है कि आपका रिचुअल्स अलग है, उनका रिचुअल्स अलग है, और एक दूसरे को अपोज करते हो, सम्मान करते हो तो ठीक है, लेकिन अपोज करते हो, इसे सोसाइटी में अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो फिर वो कल्चर का पार्ट नहीं रह जाएगा. So sir, it could be said modernity helped culture over civilization in form of equality and democracy in society. Once again,
हेमेंद्र पूछ रहे हैं, सो सर इट कुड बी सेड modernity helped culture over civilization in form of equality and democracy in society. In one sense, Hemant, in one sense, because culture it was as symbolizing the lower state of society. So in the era of democracy, the culture is going to attain the larger importance than civilization. So on that ground, Hemant, you can make a statement. Yes, that is more, you can say, related to some democratic ideals in that sense. Easy question, sir. We may have common culture irrespective of religion. Yes, definitely in Hinduism, Muslims. I will just make you clear in complete culture of India. In medieval age, what? In medieval India, you will find what is this? In medieval India, you will just come to realize that basically there is. Are you clear? Yes. So in medieval India, what you find? A simulation between the two architecture. Arcuate style, that is the that came with Turks and Mughals, and then Rabiat style that was existing in India. So a simulation between the two styles. मतलब जिसको इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हो या म्यूजिक बोलते हो, उसमें पर्शियन भी धुन है, जो पर्शियन म्यूजिक है, एंड यू नो पर्शियन राग्स है एंड इंडियन राग्स है. सो देयर इज सिमुलेशन बिटवीन द टू रागाज, यू नो. So that is very natural. In paintings, you will find the Persian elements and Indian elements. So that is the example of composite culture. Even Bhaktism and Sufism. In Bhaktism and Sufism, in Nirguna Bhakti and Sufism, I will just discuss with you. So there also you will find some sort of assimilation between the two. Rahul Karenge, sir, but why in today's modern day culture is dominated by religion? You people are, whenever you people will become thinking creature, then you find the difficulty in the real life situation. Because you know, in real life situation, there is too much propaganda. Even today, do you not find if someone is making the claim that ki parda system or the child marriage is the part of my culture? Hindus are making such a claim. Muslims are making the claim that no, this triple talaq is the part of my culture. So it depends upon कि actually the cultural elements are themselves associated with some vested interest in society. So it is being misused. हमने आगे क्वेश्चन किया नहीं, क्या कल्चर को मिसयूज होता है? यस, डेफिनेटली होता है. So that's why कि as a nation requires science and technological policy. A nation requires the foreign policy, clear-cut foreign policy, the science policy. So likewise, a nation requires a cultural policy as well. Otherwise, a lot of, you can say, the regressive elements were being represented as the part of culture, in spite of the fact that that is not the part of the culture, because culture is not static, culture is dynamic. Suppose you can say earlier, if someone is going to follow the Sanatani system of marriage with the proper consent of the parents, so that is acceptable in society, that was widely acceptable, so that was the part of culture. But today, individuals are getting more freedom in deciding their spouse, so that is the part of the present culture. तो कल्चर ऐसा नहीं कि जो कल्चर है वो कोई स्टैटिक आइडिया है, जो वो भी बदलता है. जैसे आज से 200 इयर्स बैक, 100 इयर्स बैक में जो चीज आपके लिए नॉर्मल था सोसाइटी में, वो अब एबनॉर्मल हो गया. वो अब उसको बदलने की मांग है. एक समय था कि आप रामायण और महाभारत में कल्चर देखते हो कि वुमेन आर सपोज टू बी सबमिसिव टू मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, बट टुडे women are making a claim of their own right कि we are not having bound to go to the kitchen. अब एक टाइम की नारी तुम के वो श्रद्धा हो, but today's नारी is not going to accept this dictum. तो डिपेंड करता है कि आपका कल्चर भी समय के साथ चेंज होता है.
culture and religion, then can culture also have a regressive element? The same thing I have discussed. Definitely, if someone is going to declare that yes, triple talaq is the part of my culture, some another is going to declare that no, the child marriage is parda system is the part of my culture. So that is definitely regressive elements, and in course of time, actually culture should help society to progress. Culture should not try to retard the progress of society. If culture is creating the barrier in progress of society, so culture needs to be removed and reformed. तो कल्चर में भी रिग्रेसिव एलिमेंट्स होता है. अगर वो रिग्रेसिव एलिमेंट्स अगर हमारे सोसाइटी के प्रोग्रेस को अगर रिटार्ड करता है तो उसको बदलना मांगता है. ओके है मिस्टर अंकुर? सेक्ट इज द, देखो, द स्पेसिफिक सेक्ट normally means, you are going to follow the specific cult, so you belong to the particular sect. So cult and sect are related to each other. You are going to follow the specific religious cult, matlab Hinduism, Islam, Christianity, etc. So you belong to the specific sect. So that is the difference, and that is the relationship between the two. Then can culture also be misused? Yes, definitely misused. I am recalling in the one of the northeastern state, in Panchayati Raj system, the women were given the given the reservation. In the Panchayati Raj system, in Panchayati Raj system, there is the different sorts of system. You can say local council. So in the local council, the women were given the representation. So some social patriarchs made a claim that no, that is running counter to my culture, because in my culture the women are not given such a freedom to move and take decision independently. So they are making the claim here, the vested interests are making the claim that no, women are supposed to be meek and submissive, and women have to simply remain to be confined within the boundary of the house. So if they are making such a claim, so that is the misuse, a classical example of the misuse of culture. तो कल्चर भी मिसयूज हो सकता है. आप कल्चर के नाम पर किसी के अधिकारों पर पाबंदी लगा रहे हो, और कह रहे हो कि भाई जो महिला है वो पंचायती राज सिस्टम में वुमेन नहीं जा सकती क्योंकि इससे हमारा कल्चर का हनन होगा. तो ये तो मिसयूज ऑफ कल्चर है. दैट नीड्स चेंज. कल्ट तो मैंने बताया ना, देखो एक स्पेसिफिक जो कल्ट होता है, उन्हें धर्म होता है, खास रिलीजन होता है, रिलीजन को कल्ट ही बोलते हैं. जैसे इस्लाम है, कल्ट है. क्रिश्चियनिटी है, कल्ट है. ब्राह्मणिज्म है, कल्ट है. हिंदुइज्म थोड़ा सा लार्जर टर्म है, तो हिंदुइज्म को कल्ट कहना उचित नहीं. ब्राह्मणिज्म कर सकते हो, शैविज्म कर सकते हो, वैष्णविज्म कर सकते हो. दे आर द कल्ट्स, एंड द फॉलोअर्स ऑफ द कल्ट इज द सेक्ट. I have just replied this question repeatedly. I think now you should be clear. Why do you study art and literature? So my students, here the point is, if you are making a study of political history, so you know about the evolution of a political structure. If you are making a study of economic history, it means you are going to discuss about the evolution of the economy of a particular region. If you are going to make a study of society or the social history, so you are making a study of the evolution of society. But my students, if you are going to make a study of art and literature, then you will observe how is their evolution of, then you people will come to observe how are you going to, and you can see whenever you are making a study of this and that,
So then you will just come to realize that how the people have evolved their aesthetic sense. How did the people evolve their aesthetic sense? एस्थेटिक मतलब सौंदर्य. जैसे आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ते हो, अब इसको ऐसे सुनो कि जैसे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसका मतलब कि राजनीति पॉलिटिक्स का विकास कैसे हुआ ये समझते हो. इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हो तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट समझते हो. सोशल हिस्ट्री पढ़ते हो तो सोसाइटी का डेवलपमेंट समझते हो. और अगर आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपका जो एक एस्थेटिक सेंस है वो एस्थेटिक सेंस कैसे इवॉल्व किया. जो एस्थेटिक सेंस है वो आपका कैसे इवॉल्व कर रहा है. सो यू कम टू नो हाउ एस्थेटिकली यू आर गोइंग टू इवॉल्व. So that is the example. Mr. अंकुर, मतलब एस्थेटिक का मतलब है सौंदर्य. जो आपका जो एक देखने का नजरिया है, जो आपका एक सेंस ऑफ ब्यूटी है, उसको कहते हैं एस्थेटिसिज्म. तो आपका एस्थेटिसिज्म कैसे इमर्ज कर रहा है उसका ज्ञान आर्ट एंड लिटरेचर से मिलता है. मतलब जो आपका इमोशन नहीं कर सकते उसको एस्थेटिसिज्म कहेंगे, जो कैसे इवॉल्व कर रहा है. आर्ट एंड लिटरेचर बताता है. जैसे यू आर ऑब्जर्विंग हियर द ताजमहल ऑफ आगरा, so you will come to realize that what was the sense of aestheticism of this period of Shah Jahan. What did the ruling class or the artist think in this context? For example, you are making a study of the Tanjore temple of Rajaraja I. You will observe that what is the beauty of and what is the sense of aestheticism prevailing in that era. Then you will come to, for example, you will just make a study of the literary piece, a great piece of Abhigyan Shakuntalam of Kalidas. So you will come to realize what the aesthetic sense, what the sense of aestheticism Kalidas as a poet was having, and what way it reflected the aesthetic sense of its age. तो इस तरह से उसका पता चल पाता है. आर्ट एंड लिटरेचर का स्टडी करने से यही फायदा होता है. Of why Indian culture is considered to be an example of polyphonic culture. Polyphonic, what is the meaning of polyphonic? In Hindi that is called, you can say that is the term bahulwadi. Means ki that is, you can use the term ki polyphonic means ki the diversified. How is Indian culture, how is Indian culture so diversified and polyphonic? Polyphonic means ki more than one trend. So my students, here what content has been written here, so on that basis you will not understand properly ki how did Indian culture evolve polyphonically. Then you can ask me the question ki then why I have set such a question during the early phase, because I come to realize that before teaching you the part of culture, I should give you some basic ideas about religion, culture, polyphonism, the diversity of culture, etc. And so please have the patience. Whenever I will finish the culture part, so everything will be crystal clear. Why the culture is going to be polyphonic? It is very natural, because suppose you can say you will go to the Vedic Aryans. When there was the development of Vedic culture, then the Aryan culture is spread to the tribal areas. So there was the exchange between the tribal culture and the Aryan culture. So that going to develop a hybrid type of culture. And once from North India, there was the cultural expansion towards South. So as from North India, there was the cultural expansion of South. So it was going to, you can say there was the exchange between the northern culture and southern culture. So it developed some sort of the polyphonic culture. For example, you can say Bhaktism that went to South India. Then it mixed with the local elements. That is the Sangam literature. Then once again it returned to North India and it started a movement.
That is called bhakti movement in North India. निर्गुणा भक्ति, सगुणा भक्ति. तो मतलब कल्चरल एक्सचेंज होता रहा. नॉर्थ साउथ के बीच कल्चरल एक्सचेंज हुआ. ट्राइबल जो जनजातीय लोग थे आ रहे थे, उनके बीच कल्चरल एक्सचेंज हुआ. तो हमारी जो कल्चर जो हाइब्रिड हो गई, उसी को कहते हैं पोलीफोनिक. अब ये आपको 2-4 लाइन में समझाना मुश्किल है. जब मैं पूरी आपका पार्ट फर्स्ट, मैंने क्या कहा 3 पार्ट, मैंने टोटल 4 पार्ट होगा. चौथा पार्ट तो बस छोटा सा है, जो क्योंकि मॉडर्न पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया. मुख्य रूप से 3 पार्ट होगा. तो ये 3 पार्ट कवर करने के बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंडियन कल्चर पोलीफोनिक है. ओके मिस्टर अंकुर, एनी प्रॉब्लम? अब here the question is कि how can the understanding of culture and heritage is going to be useful for the study of other subjects? So my point is, my students, today you can say why you are making a study of, if someone is going to ask you a very plain question, why are you going to study culture? What is the use of studying culture? So here I have to make this point clear. Actually culture, the knowledge of culture is going to help you in the various fields of life. For example, if you have to conduct your foreign policy, so in foreign policy, cultural diplomacy is much important today. अब suppose you can say you are having the Bharatnatyam. So Bharatnatyam is the means for the soft power in the world. For example, you have spread yoga. So yoga is working as a soft power. Do you know the meaning of soft power? Please give me the hint. Do you know the meaning of soft power? Yes or no? Please be fast and type. देखो, there is a basic concept in international relation. There are the 2 basic difference and the basic concept of the basic connotation in the power, the hard power and the soft power. So my point is कि hard power and soft power, 2 terms you come to here. So hard power means कि if you are owning the military power and you try to subdue the others by dint of the military power, that is hard power. But if you are going to influence some other country on the basis of your culture, on the basis of your ideology, on the basis of your way of life and behavior, so that is called soft power. In international relations, both hard power and soft power are having their importance, both equally. You cannot say that the soft power is not important, simply hard power is important, or hard power is not important, simply soft power is important. So in this way, you are going to discuss about that. So in foreign policy, culture is going to be a tool for the soft power. Likewise, you can say, Southeast Asia, you have to develop the relations with the country of Southeast Asia. You are using Buddhism. Nalanda University is being renovated with the support of Singapore. Why? Because we have already having a historical, you can say, basis for relationship between India and Southeast Asia. So we are using here the culture as a tool for extending our foreign policy, and you can say setting our foot in the region of Southeast Asia. So in this way ये working करता है. फिर economy. So if culturally, you can say, if there is the cultural conflict in your country, here find example of Manipur. What happened to the economy of Manipur? On highways, you can say national highways, you can say the different automobiles, and the road was completely stranded due to the strike, and because you can say cookies just blocked the road, and Methi could not carry the supply line. So this is obviously, you can say, if Raghuram Rajan once made a statement, if you didn't maintain the religious tolerance, then that is going to affect your economy. Your economy would not progress.
तो आपको उसके लिए धार्मिक एक तरह से संतुलन बनाना है, तभी आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। तो ये मायने रखता है। हिंदी में हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि सॉफ्ट पावर को तो हिंदी में सॉफ्ट पावर ही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे, और हार्ड पावर को भी हार्ड पावर ही कह लो हिंदी में भी। तो अगर किसी को सैनिक शक्ति के बल पर तुम अगर दबाते हो या उस पर दबदबा बनाते हो तो उसको कहते हैं हार्ड पावर। ये हार्ड पावर का सिंबलाइज करता है। और किसी को अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने जीवन पद्धति अपनी तरफ आकर्षित करके उसको अगर तुम प्रभावित करते हो तो सॉफ्ट पावर है। यहां पर जो कल्चर है वो आपके सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। दुनिया आपको, दूसरा देश आपके कल्चर से प्रभावित होती है तो आपका सॉफ्ट पावर बढ़ता है। जैसे भरतनाट्यम आपका हुआ, योगा हुआ, दुनिया में एक्सेप्टेंस उसको मिल रहा है तो आपका सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है। मैंने बताया कि साउथ ईस्ट एशिया से हमारा संबंध बुद्धिज्म के आधार पर था, फिर हम बुद्धिज्म के आधार पर संबंध को रिवाइव कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमी में क्या है कि रिलीजन को तो आप मानते हो कल्चर का पार्ट है, कल्चर का सिनोनिम नहीं है, पार्ट है। और अगर आपका रिलीजियस टॉलरेंस नहीं रहा, कंफ्लिक्ट हो गया, जैसे मणिपुर कुकी और मैती में ही तुमने देखा, तो कल्चरल कंफ्लिक्ट हुआ, तो परिणाम क्या हुआ, देखिए वहां पर इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। द सेम हैपेंड इन द केस, अगर मान लो कि कई बार वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ जाते हैं, रॉयट छिड़ जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी इकोनॉमी कितना, अब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो कितना यहां से वहां से बफेलो मीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट इंडिया का ने डेवलप किया हुआ है, तो दैट वाज गोइंग टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो जब आपका रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी धाराशायी हो जाएगी। यही मैंने बताने की कोशिश की है। और उसी तरह से internal security, for your security it is a major danger. Up suppose you can say you will not maintain the, if you are going to culturally persecute others, you are going to persecute others religiously, so that will be the breeding ground of today the fundamentalism and terrorism, you know. So ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप अगर इंटरनल सिक्योरिटी में तुम देखो, बहुत सारे आज की तारीख में क्या है, आज आपने फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म की बात देखी, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका जो एक कल्चरल पॉलिसी है, उचित कल्चरल पॉलिसी है, वो वैसे लोगों को आइसोलेट कर देता है। तो सिक्योरिटी के लिए भी एक उचित कल्चरल पॉलिसी आपकी आवश्यक है। तो आप अपने कल्चर को जानो, जैसे अपने कल्चर को जानोगे कि रिलीजन कल्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो कम से कम धार्मिक उन्माद, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, वो तो कम हो जाएगा सोसाइटी में। So that is the point of difference. Are you clear? Or any further question, my students? but is Dravidian is also be categorized as culture? Yes, why not? But First, yes, Dravidian can be characterized as culture. It is true. But it is the part of hybrid culture of India. Indian culture is having a larger connotation, you know. And Dravidian culture is the part of it. okay, sir. और बाकी लोग ओके हैं अब तक? Yes. तो ये टॉपिक मैंने शुरू में कुछ कवर कर दिया, बिकॉज whenever you go through the initial topic and then whenever I will finish the part 1 and part 2, so then you will be crystal clear, no problem at all. So that is the previous year's question. You can go through it. Today, first of all, observe the map of India. R. Sharma has made a very apt remark. If for the proper knowledge of Indian history, you need some knowledge of geography as well. Because geography is giving a space and history is giving time. So geography and history both are matching to each other. So, and I believe that geography and history are the backbone of the whole general studies, you know.
it is through history we'll have the knowledge of changes, and that will start from the ancient period until today. Changes are going on, and the changes can be reflected comprehensively through the subject history, because all other subjects are simply reflecting their specific part, a specific trend, but history is reflecting as a whole. So अब observe here the geography of India. You will come to know that basically it is actually diversification. Geographical diversification is the feature of India. But earlier than that, here you have to simply observe the rainfall pattern, not the present pattern I am talking about, because in the era of Anthropocene, presently, when there is the, you can say, ecology is badly affected. So I am not talking about the present scenario. If you will observe here during the ancient period, you will come to realize कि उस समय जो प्राचीन काल में तुम अगर देखोगे कि भाई ये उस समय रेनफॉल कैसे था और रेनफॉल के आधार पर ही फॉरेस्टेशन हुआ है, you will come to realize that कि near Indus river and nearby region, the rainfall, the proportion of rainfall was something between 10 to 25 cm, 10 to 25 centimeter, and then you are moving to this Indus-Ganges divide region, the Indus-Ganges divide. So here the proportion of rainfall was nearly 25 to 37 सेंटीमीटर, 25 to 37 सेंटीमीटर है. मतलब समझ रहे होंगे कि इसमें 25 से 36 तक था. And then you are coming to this upper Gangetic basin, starting from Haridwar and reaching up to this confluence of Ganges and Yamuna at Allahabad, or presently Prayagraj, you know. So during this, in this region, you will come to realize that the quantity of rainfall was something between 37 centimeter to 60 centimeter. And then you are coming to the middle Ganga Valley. Middle Ganga Valley starting from Allahabad or reaching up to present Bhagalpur. So there the proportion is what? That is, you can say, 60 to 125. And then you are just coming from this middle Ganga Valley up to lower Ganga Valley. That is something between 125 to 250 सेंटीमीटर. मतलब यही प्रोपोर्शन है इधर 10 to 25 cm, here 25 to 37 cm. When I am talking about during the ancient period, not present context. So you will come to realize it was the rainfall. So it was, even the pattern of forestation was following the same rainfall pattern. Up here you can observe in the northwest region, as there was the less rainfall, so you will find here the less forestation. Means it was sparsely populated, this region. Then you are coming to this Indus Ganga divide, so it was slightly more forested. And then you are coming to upper Gangetic basin, a bit more forested. Then you are coming to middle Ganga valley, you can say more forested, and then you are just coming to here lower Ganga valley, much densely forested. मतलब जैसे जैसे आप पश्चिम से पूरब की तरफ आते हो, जंगल और भी घने होते जाते हैं. दे आर डेंसली फॉरेस्टेड. तो अब फॉर क्लियरिंग द रीजन, फॉर एग्जांपल यू कैन से कि द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन appeared in Indus Valley. It is due to the fact that it was relatively easy to clear the forest in this region. So that became possible. But you are coming to this region, so slightly more. So in this way, what you know is upper Gangetic basin. So Vedic Aryans, actually Indus Valley, the people of Indus Valley reach up to this upper Gangetic basin, mean ki up to Alamgirpur. Here you will find during the last phase, Indus Valley people could reach up to Alamgirpur in UP. But during the last phase, you know. And during the Vedic period, you will come to realize that Aryans, during the Rig-Vedic period, they remained just in the west of river Yamuna. And
during later Vedic period, they could spread to upper Gangetic basin. And in 6th century BC onwards, they could move to Middle Ganga Valley. So Middle Ganga Valley could be, developed in 6th century BC, during 6th century BC. But what you today know as the Lower Ganga Valley, so Lower Ganga Valley could be developed up to early medieval age. मतलब कि देखो, आप जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिविलाइजेशन धीरे धीरे फॉलो करेगा. मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में इसलिए हुआ कि फॉरेस्ट कम था, तो जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज, तो विद द सपोर्ट ऑफ द कॉपर एंड ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट्स यू कैन क्लियर द रीजन. बट फॉर क्लियरिंग द dense forest of Middle Ganga Valley, you needed the iron plowshare and iron axe. So when the iron tools were available, only then you can clear the region. So it was the difference between the two, the mid, upper and the middle. तो इस तरह से आप धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जैसे जैसे आप स्प्रेड करते हो, आप इस फॉरेस्ट को क्लियर करते जाते हो. और जैसे जैसे ये डेंस होते जाते हैं, वैसे आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. जैसे यहां पर जब आप गंगा वैली में आते हो, तो मिडल गंगा वैली में, तो यू नीड द आयरन implements, iron axe, in this way you will just come to realize. Then you have to observe the topography of India, and this geographical diversities will lead to the cultural diversity later. Now prehistoric, historic period and proto-historic period, I have to make you clear. देखो, अब one by one, it is just like a cakewalk. You will not find difficulty. Here are the two terms. You will find one term, prehistoric period. Prehistoric period. My students, you will just, there is the issue, there is the question. If someone is going to ask you, what is prehistoric phase, so you will simply reply, if for the study of the period, you are simply having archaeological evidence, but literary evidence is not available. It means कि that is prehistoric phase. मतलब प्रीहिस्टोरिक फेज को हिंदी में कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल. कोई अगर आपसे यह पूछता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, तो आप सिंपली रिप्लाई करोगे कि जिस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, उसके लिए साहित्य उपलब्ध नहीं है. मतलब साहित्यिक साक्ष्य, जैसे देखो दो तरह के साक्ष्य होते हैं. वन इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? द पीपल आर यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट मेटल्स, the pots, the tools, etc. So either they had to lie beneath the earth, or they had to lie on the, or you can say, upper ground of the earth. In both the cases you find that whenever some archaeologists are making the excavation and try to find out the objects, and on the basis of the found objects, they try to reconstruct the life of a particular community in a region, तो दैट इज नोन एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. मतलब जो कोई पुरातत्व शास्त्री हैं, वो आते हैं और खुदाई करते हैं, और जो प्राचीन लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो सामग्रियां हैं उसका अध्ययन करके, और जब उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. लिटरेरी एविडेंस का मतलब है बुक, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, So through textual knowledge you just come to know about someone, so that is called literary evidence. तो प्री हिस्टोरिक फेज हुआ है कि जिसकी में स्टडी के लिए लिटरेरी एविडेंस है ही नहीं, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि तब तक स्क्रिप्ट नहीं डेवलप किया था. जब स्क्रिप्ट डेवलप नहीं करेगा तो आप लिटरेरी एविडेंस कहां से लाओगे? सो फॉर द स्टडी दे आर नॉट हैविंग द लिटरेरी एविडेंस. द नेक्स्ट वन यू फाइंड प्रोटो हिस्टोरिक.
Protohistoric is the period for the study of which you are using the archaeological evidence. Although you are having some literary evidence, but this literary evidence is not in use. जैसे प्रोटोहिस्टोरिक उसको बोलते हैं, थोड़ा सा 25 कर दो, टू मच। जैसे प्रोटोहिस्टोरिक उसको बोलते हैं कि जिसके स्टडी के लिए आप आर्कियोलॉजिकल में आता है। लिटरेरी एविडेंस है, लेकिन लिटरेरी एविडेंस को आप यूज नहीं कर पाते, एक तरह से डोरमेंट पड़ा हुआ है, यू कैन नॉट यूज इट, तो उसको बोलते हैं प्रोटोहिस्टोरिक। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सपोज टू बी प्रोटोहिस्टोरिक। Even Vedic civilization, because in Harappan civilization you are having the script, but you have not deciphered it. In case of Vedic civilization, you will find Vedic literature, but they are not in written form. They are through oral tradition, going from generation to generation. So that's why it is not authentic. So that's why this Vedic civilization is also supposed to belong to this proto-historic phase. मतलब जैसे वैदिक पीरियड है तो उसमें क्या है, साहित्य तो है वैदिक साहित्य, लेकिन उसमें उसका लिखित रूप नहीं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है, लिखित तो मिल जाता है, स्क्रिप्ट उसका जो इंस्क्रिप्शन है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। इन दोनों को प्रोटोहिस्टोरिक में रख लेते हैं। इसके अलावा प्रोटोहिस्टोरिक का एक बेसिस और है, व्हिच आई हैव टू डिस्कस विथ यू। वन बेसिस इज कि once the agriculture started, so prehistoric was transformed into protohistoric. One basis is when the literary evidence is available, although not in use, so that is protohistoric. And another is if the agriculture started, that belongs to protohistoric. So Chalcolithic period and Harappan civilization, they are supposed to belong to the protohistoric normally. इसके बाद एक तीसरा फेज आता है हिस्टोरिक. हिस्टोरिक इज गोइंग टू बी डिफरेंट. Next one phase you just come to know, that is historic phase, and this historic phase is supposed to have started from 6th century BC onwards. This historic phase is supposed to have started from 600 BC onwards, so that is called historic phase. So prehistoric, protohistoric and historic, three phases they are supposed to belong to. In 6th century BC. So this historic phase is supposed to have started because it is having certain criteria. For the study of the period, archaeological evidence is available, literary evidence is available, even the foreign literature is available. For example, for the study of 6th century BC, माने जिस काल के अध्ययन के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, लिटरेरी एविडेंस हो और फॉरेन अकाउंट भी अवेलेबल हो, उसको आप हिस्टोरिक फेज कहोगे. Are you clear? Any difficulty? Gyanesh पूछ रहे सर कि what is difference between Harappan civilization and Vedic civilization? Gyanesh, you are going too far. Please have patience. Let me teach you Harappan civilization first and Vedic civilization. Only then better to ask the question about the difference, because whenever I will teach you and I will finish my class, so you will be crystal clear. And Harappan civilization is falling in the part 1. And Vedic civilization is falling in the part 2. So please have the patience. I am confident that once you will go through my method, everything will be crystal clear. अब जल्दी बोलो अंकुर. आज कह रहे हैं कि historic phase once. Historic phase. Yuvraj, for the study of the period, you are having archaeological evidence, even literary evidence is used, and even the foreign account. जैसे आप Alexander's historians came to India, so they left their account for the study of Northwest. तो फॉरेन अकाउंट भी अवेलेबल है. तो जिस काल स्टडी, जिस पीरियड के अध्ययन के लिए आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेरी एविडेंस है और फॉरेन अकाउंट भी है, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल फेज. जैसे इंडिया में आप सम टोटल याद रखो, 6th century BC, जिसको महाजनपद पीरियड कहोगे, वो है हिस्टोरिक फेज. एग्रीकल्चर कौन प्रोटो हिस्टोरिक? हाँ, एग्रीकल्चर का को जोड़ा जाता है आरोही प्रोटो हिस्टोरिक से.
तो कह रहे हैं कि सर वेद तो लिखा जाता था। नहीं, वेद ओरल ट्रेडिशन से चलता था। उसका रिटर्न फॉर्म सबसे अर्लीस्ट मिलता है 1100 BC का, 1100 सी में, 1100 में। वेद लिखा नहीं जाता था। अभी तुम लोग को बहुत कुछ समझना है, आप पेशेंस से रहो। शिवांगी पूछ रही सर व्हाई वैदिक सिविलाइजेशन इज प्रोटो हिस्ट्री। Because Vedic Aryans were having the language that is Sanskrit language, but they are not having their script. स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का डिफरेंस समझते हो ना? स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, और लिपि नहीं रहेगी तो आप उसको लिख नहीं पाओगे ना। तो जो भी वैदिक लिटरेचर है वो ओरल फॉर्म में ही है, सिर्फ वो उसको प्रोनाउंस करते थे। द गुरु वॉज प्रोनाउंसिंग एंड द डिसाइपल्स वेर लर्निंग, and it was through rote learning. They used to compile so many such a vast literature like Vedas, Upanishad, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. So through oral tradition, it was moving from generation to generation. So that's why even it falls under the so-called proto-historic phase. फॉरेन अकाउंट मींस विदेशी वृत्तांत, जो विदेशी लेखक जो भारत में आए हिंदुस्तान में, उन्होंने जो लिखा और अपनी लिखित साक्ष्य को छोड़ा, तो जो लिखित साक्ष्य छोड़ा गया उसी को कहते हैं फॉरेन लिटरेचर। नंदिनी पूछी सर वैदिक पीरियड इज द पार्ट ऑफ हिस्टोरिक पीरियड और इटसेल्फ आर हिस्टोरी। वैदिक हिस्टोरिक पीरियड का मतलब हुआ कि जब से वो क्राइटेरिया पर वैदिक सिविलाइजेशन नहीं क्वालिफाई होता है। हिस्टोरिक पीरियड पर आपका महाजनपद पीरियड या बुद्धा एज जिसको 600 BC कहते हो, दैट इज फॉलिंग अंडर हिस्टोरिक पीरियड। रोशन कह रहे हैं सर कि एग्रीकल्चर वाज इन हड़प्पा आल्सो देन इट इज प्री हिस्टोरिक और प्रोटो। प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन कैलकोलिथिक पीरियड आर फॉलिंग अंडर द प्रोटो हिस्टोरिक। ओके ओके, अब now you can say Paleolithic period, millions of years ago to 10,000 BC. अब there are the three phases, you just make a study. अब my students, I have to make you clear कि how to go through the topic. अब firstly we will talk about Paleolithic period. Okay. I am talking about that period, and then I will make that is just 1 minute. Now you people have to enter into part 1. In part 1, you people have to deal with the topic like Paleolithic period. Whenever you will go through this Paleolithic period, you will come to realize, starting from lakhs of years earlier, to Paleolithic period started to lakhs of years earlier to 10,000 BC. BC means कि before common era, और इसको earlier कहते थे before Christ. So that is a Paleolithic period. Such a long time you can see. It consisted of different sub-periods, lower Paleolithic, lower Paleolithic, middle Paleolithic, and Mesolithic. I have to make you clear. So you have to go through it. I'll just discuss in the regular. And then Mesolithic period. So even that belongs to a Stone Age. Actually, you will observe the development and evolution of human society. So the first phase is the Stone Age. The Paleolithic period belongs to a Stone Age. Mesolithic period is starting from 10,000 BC to 6,000 BC. That also belongs to a Stone Age. Then comes Neolithic period. Starting from 6,000 BC
leave it open-ended to just open-ended. We are starting from Neolithic period to open-ended. So Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period, the three phases you belong. And all the three phases belong to the single one phase, and that is called a Stone Age. That is called a Stone Age, you know. So here you have to discuss about the Stone Age. Okay. So that belongs to a Stone Age. The Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period. And what is the difference in the Stone Age? I'll make you clear. Then comes Metal Age. Even in Metal Age, there are the two phases, copper and iron. So then comes the turn of Chalcolithic phase. Chalcolithic phase means कि आपको दो मिलेगा. अब हिंदी में पैलोलिथिक को पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मेजोलिथिक को मध्य पाषाण काल बोलते हैं, न्यूलिथिक को नवपाषाण काल बोलते हैं. तीनों में पाषाण है, ये प्रस्तर युग है. और कैलकोलिथिक का मतलब होता है ताम्र पाषाण काल. तो कैलकोलिथिक फेज में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है कि इसमें तांबे भी हैं और पत्थर के भी हैं. तो तांबे और पत्थर दोनों हैं. तो इन कैलकोलिथिक यू विल कम टू रियलाइज दैट कि देयर इज द यूज ऑफ कॉपर as well as the use of stone. So copper and stone both came into use. So that is called Chalcolithic period, and this period is supposed to have moved from 3500 BCE onwards. That is 3500 BCE onwards. Okay. ओके. तो कैलकुलेटिक है. फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो दैट इज 2600 BCE टू 1900 BCE. फिलहाल इतना ही आप ध्यान रखो. अभी जो पार्ट है उसका लेट हड़प्पन कल्चर है, कैलकुलिथिक पीरियड है, आयरन फेज है. आई विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. बट माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि एक्चुअली हियर यू आर यूजिंग सम फार्मूला इन पार्ट फर्स्ट. व्हाट इज द फार्मूला? तो दैट इज क्लाइमेटिक चेंज, climatic change, then technological, क्या हो रहा है, माइक को कल चेक करवाओ. In this way I cannot sit here. What is this? Ankur, please. Chalcolithic, technological change, then change in livelihood, then change in livelihood, you know, and then change in social relation, change in social relation, and then cultural change. Cultural change. So many changes you have to underline here. Means climatic change, technological change, change in livelihood, change in social relation, and cultural change. So many changes you find here. Now my students, you have to follow the same formula. Now you will come to know, I'll discuss about all these things. I'll make you clear. Paleolithic, you have to go through it. Then Chalcolithic period, Harappan civilization. Understand the change. Climatic factor, technological change, change in livelihood, change in social relations, change in cultural outlook. Okay? Climatic factors.
technological advancement. Mesolithic, that is the point here. Mesolithic stone. Change in livelihood. Social change. Cultural change. Our paintings made in the Mesolithic period. That is cultural change में paintings. Paintings. Meaning of Mesolithic paintings. Aesthetic sense of Mesolithic paintings. How far the aesthetic sense of Mesolithic paintings is comparable to modern paintings? This is the question in 2015. Why do you study the Mesolithic art? इंडस वैली अप टू दिस पीरियड देखो इंडस वैली हम लोग को अलग करना है क्योंकि बहुत वो एक्सपेंसिव है, लेकिन यहां तक हम लोग को कवर कर लेना है. तो tomorrow that is my target and you people have to follow, go through your study material. I will see you tomorrow, and I think let me discuss in the class, and once I will going to attend the class, and then I am confident can make you the things crystal clear. Whatever queries you find today, so that will you solve tomorrow. Okay, thank you very much. I'll see you tomorrow. Good night.